Good evening everyone. I am Yash. I am from Bihar. I have completed my master from NIT Hamirpur. Today my topic is chemical kinetics. Chemical kinetics deals with the rate of the reaction. Okay? Chemical kinetics deals with the rate of reaction. Its measurement and factor affecting the rate of the reaction. It also measure mechanism of a reaction. Now we discuss which type of reaction is studied in the chemical kinetics. There are three type of reaction. First fast reaction. These reactions are completed in a fraction of a second. For example, neutralization reaction are completed in a fraction of a second. तो क्या होता है ना, ये बहुत फास्ट होता है, जिसके कारण से इसलिए आप इसके रेट को मेजर नहीं कर सकते. तो केमिकल काइनेटिक्स में हम फास्ट रिएक्शन को स्टडी नहीं करेंगे. ओके. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस एसिड बेस रिएक्शन, सिंपली कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन. फॉर एग्जांपल एसिड HCl and NaOH base react and the formation of a salt NaOH plus salt and water. These reactions are very fast, इसलिए हम इसको केमिकल काइनेटिक्स में इसके रेट को मेजर नहीं कर सकते. सेकेंड स्लो रिएक्शन. स्लो रिएक्शन में क्या होता है, दिस रिएक्शन टेक लॉन्ग टाइम, मंथ, ईयर. दैट्स व्हाई वी नॉट स्टडी द रेट ऑफ अ स्लो रिएक्शन. फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ अ आयरन. ठीक है, आपने आयरन का टुकड़ा लिया और उसको आपने रख दिया इन्वायरमेंट में, तो वो क्या होगा कि ऐसा नहीं कि आज आपने रखा और कल जाके उसमें रस्ट कर जाएगा. आप आपने रखा 2 दिन के बाद रस्ट कर जाएगा. उसमें क्या होता है, समय लगता है, मंथ, ईयर, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है, इसलिए आप इसके रेट को भी मेजर नहीं कर सकते. थर्ड एग्जाम्पल मॉडरेट रिएक्शन. This reaction take to complete a reaction this reaction complete in a minute, hour and a second. That's why we study moderate reaction in a chemical kinetics. For example, formation of ammonia. N2 plus 3H2 react and to form 2 mole of NH3. Okay, that's why in a chemical kinetics we study moderate reaction. Now we discuss rate of reaction. Rate of reaction. Here, if A mole of A react with B mole of B to form a product, या form a C mole of C plus D mole of D. Okay, they are two different things: rate of appearance and disappearance, and rate of the reaction. ठीक है, the rate of appearance and disappearance. Okay. Rate of appearance of C is equal to del C upon del D. Okay, plus sign indicate simply formation of a product. That's why it's a plus sign. Okay, rate of disappearance of A. Rate of disappearance minus del A upon del T. Here minus indicate deformation of a reactant goes, concentration of reactant goes down. Okay, say here sign minus negative sign. Okay, now rate of reaction is written in the term of appearance and disappearance of product and reactant per unit stoichiometric coefficient. Okay,
For example, rate of reaction. Rate of reaction is equal to minus A upon minus 1 upon A del A by del A upon del B. Okay. In the form of B, minus 1 upon B del B by del T. Del B by del T. Okay. In term of C, plus 1 upon C del C upon del D. In term of D, plus 1 upon D del D upon del D. Okay. So here rate of appearance simply del C by del T. But rate of the reaction in term of per unit stoichiometric coefficient. Okay. Now discuss rate law. Rate law based on the law of mass action. Based on law of mass action. Based on law of mass. According to this law, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant raised by some power. Some power is determined experimentally. For example, if A mole of A react with B mole of B and form product. Okay, the rate of reaction is directly proportional to concentration of a reactant, concentration of taking concentration of A and concentration of B to the power some power P and Q. Here P and Q not equal to stoichiometric coefficient N B because P and Q experimentally defined. Okay, and P plus Q is equal to overall order of the reaction. Overall order of the reaction. Okay, P and Q is equal to NB in case of elementary reaction only. Okay. Now we discuss a relation between rate of the reaction and reactant rate constant of the reactant. If N1 mole of A react with N2 mole of B to form N3 mole of C plus N4 mole of D. Okay, the differential rate of reaction minus A upon N1 D A upon C के लिए भी लिख सकते हैं और D के लिए भी लिख सकते हैं. ओके, हम इसी के यहाँ पे एक टर्म ले रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को रेट कांस्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं. रेट कांस्टेंट क्या कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N1 कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N2. ओके, आप हम इसे क्या बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन और इसको क्या बोलते हैं रेट कांस्टेंट. ये सारा क्या है रेट ऑफ रिएक्शन और ये K इक्वल टू रेट कांस्टेंट. ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से N1 को इस साइड भेजते हैं. ठीक है, माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू N1 इंटू के कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर N1 और कंसंट्रेशन ऑफ B टू दी पावर N2. ओके, हियर माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या रेट ऑफ disappearance of A, rate of disappearance of A. That's why this is called rate constant of disappearance of A. Okay. Now here N1K is equal to suppose that K of A into concentration of A to the power N, concentration of B to the power N2. Okay. Now we equate N1 into K is equal to N K. So K is equal to N1 into
N1 इंटू के। ओके, अगर आप किसी क्वेश्चन में, ठीक है, आपको किसी एक रिएक्टेंट का आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का, उसमें आप उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, उसका ए का रिएक्टेंट का रेट निकल जाएगा। ओके, इसको हम समझते हैं एग्जांपल। सपोज दैट इन an equation 4 mole of A react with 3 mole of B and to form 2 mole of C. Okay, here K1 is equal to rate of disappearance of A, rate constant equals rate constant of disappearance of A, ठीक है। K2 is equal to rate constant of disappearance of B, okay। K3 is equal to, is a given data है, given, N3 is equal to rate constant of appearance of C, ठीक है। Find the relation between, question said that find the relation between K1, K2 and K3, K1, K2 and K3, ओके। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए अब आप क्या करोगे, K1, K2, K3 निकालना है। ये K क्या है, रेट कांस्टेंट है किसका, A का। तो अगर आपको A निकालना है तो K इक्वल टू, मैंने बताया था स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A यानी 4, ओके, एंड ओवरऑल रेट कांस्टेंट गिवन इन K, तो 4 इक्वल टू K, ओके। हियर K1 is simply K is simply K1, तो हम से K एक ही जगह पे क्या कर सकते हैं, K1 लिख सकते हैं, तो K1 इक्वल टू 4K, और यहाँ से हम क्या करेंगे, K की वैल्यू निकालेंगे, तो K इक्वल टू K1 अपॉन 4, ओके। सिमिलरली हम B के लिए करेंगे, KB इक्वल टू, इसका स्टोइकोमेट्रिक कितना है, 3 इंटू ओवरऑल रेट कांस्टेंट K, ओके। अब यहां से क्या करो, KB को क्या हम K2 लिख सकते हैं, तो K2 इक्वल टू 3 इंटू K। अब यहां से आप K की वैल्यू निकालो, तो K इक्वल टू K2 अपॉन 3, ओके। सिमिलरली K3 के लिए KC इक्वल टू 2 इंटू K, ओके। KC को हम क्या कह सकते हैं, K3 कह सकते हैं, तो K3 इक्वल टू 2 इंटू K। अब यहां से आप K की वैल्यू निकालोगे, तो K इक्वल टू K3 इंटू K3/2, ओके। अब ये तीनों आ गया। अब आप यहाँ पे देखो, अब किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट तो सारा सेम ही होगा, इसलिए क्या हो गया, ये तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ओके। K1/4 इक्वल टू K2/3 इक्वल टू K3/2, ये आपका इसका रिलेशन आ गया, किसमें, K1, K2, K3, ओके। थैंक यू।